Namaskar, good evening. On behalf of Surya Roshni Limited, I extend a very warm welcome to everyone for joining us today. Before starting the call today, I would like to take this opportunity to wish everyone a very happy Diwali. On this call, we are joined by Mr. Tarun Baldua, CEO Steel Operation, Mr. Jitendra Agrawal, CEO Lighting and Consumer Durable, our investor advisor SGA, and our company secretary Mr. B.B. Singhal. I hope everyone had an opportunity to go through the financial results, press release and investor presentation, which has been uploaded on the stock exchange as well as on our company website. Surya Roshni is celebrating its Golden Jubilee year in FY2023-24, marking 50 years of excellence in steel pipes, electrical appliances and consumer durable industry. Surya Roshni products are trusted by millions of consumers in India and around the world, and the company has a very strong presence in global market with export to over 50 countries. As Surya Roshni celebrates its Golden Jubilee year, the company is poised to enter a very new phase of growth and development. The company has a very strong foundation, a very clear vision and a talented team to execute its plans. I am confident that Surya Roshni will continue to achieve new heights in years to come. On this special occasion, I would like to thank all of our stakeholders, employees, customers and partners for their continued support over the years. To reward the shareholder on our Golden Jubilee, Board of Directors approved an interim dividend at 50% of the paid-up value. And now moving on to the highlights of the quarter. Due to favorable volume growth in steel pipe and value-added goods in lighting and consumer durable segment, the firm reported better profitability on a year-over-year basis despite a marginal fall in revenue. Due to the successful implementation of backward integration strategies and favorable volume growth, the company witnessed a notable improvement in its EBITDA, which increased by 6% to reach 139 crore. Furthermore, the company achieved a commendable EBITDA margins of 7.3% for the quarter, company as a whole. Over the past few years, company has placed its emphasis on reducing the debt. Even during the H1 FY24, in last 6 months, the debt reduced by almost rupees 190 crore and the debt to equity ratio stood at 0.11 as of 30th September 2023. With this, the company intends to become debt-free by next year. And coming to lighting and consumer durable, the segment recorded a revenue of 377 crore in Q2 FY24, which is almost similar to the corresponding period last year. This was achieved despite the shift in festival seasons from Q2 to Q3 in the current financial year as compared to previous year, where the company recorded revenue related to festive season in Q2 FY23 as well. Both Q2 FY24 and H1 FY24 have demonstrated enhanced profitability aligning with the management previously communicated expected as highlighted in their commentary during preceding quarters. Now, despite observing favorable volume growth even in lighting segment, but we experience price reduction in the range of about 15 to 20% on year-on-year basis and 10 to 15% during H1 FY23,
resulting in flattish revenue performance. But our company has consistently demonstrated a proactive approach to backward integration, leveraging our investments in the PLI program. This strategic move has not only enhanced our competitiveness within the market, but also has resulted in improved operating profitability at an EBITDA margin level to 9.3% for Q2 FY24. The professional lighting segment recorded 20% growth in Q2 and 23% in H1. The robust expansion of professional lighting segment can be primarily attributed to the concurrent growth observed in both private as well as government-led investment. The consumer lighting has also experienced decent volume growth. The consumer lighting segment has exhibited robust growth in various categories such as LED batten, downlighter, decorative lighting, and other solar lighting with impressive double-digit volume growth expansion. Within the consumer durable segment, certain segment has exhibited robust growth. The strong growth in these subcategories was also aided by the successful introduction of 12 innovative paint models and 16 consumer appliances product in FY24 Q2. PVC pipe has witnessed 11% growth in Q2. During the upcoming quarters, our company will continue to strategically introduce a diverse range of very innovative products within the lighting consumer durable business segment. And this forthcoming product launches are expected to contribute significantly to our overall growth and market presence. We are hopeful of achieving double-digit revenue growth for whole FY24 on the back of better H2 FY24 in terms of profitability. We hope to achieve our target that we have outlined in our previous commentaries. Our strategic focus remain on bolstering our market presence and brand recognition through intensified investment in advertising and marketing. These efforts aim to augment our market share and enhance the visibility of our brand. Additionally, we are committed to fortifying our dealers and distributor network by implementing a range of engaging initiatives. Based on our analysis, it is anticipated that our lighting and consumer durable segment will exhibit a very positive performance in H2 FY24 and FY25, provided that all sectors of Indian economy maintain their current growth trajectory. Now moving on to the steel pipe business, the segment has experienced a good volume growth of about 12%, which was overshadowed by the downward pricing pressure ranging from 10 to 15% across different grades of steel during FY24, H1 FY24. On the full year basis, we continue to anticipate a 12 to 13% volume growth. Our optimism stems on the back of strong order book of about almost 800 crore, especially from oil and gas segments for API pipes, as well as the potential for growth in domestic market as well, which we believe will help mitigate any potential shortfalls we may encounter in the exports market. Within API pipes, the line pipe business has experienced a deceleration in order due to the upcoming general election. Other key business sector for API pipes order is from city gas distribution sector, which has demonstrated commendable growth and has a potential outlook. We expect a very positive business momentum for GI pipes too,
to persist throughout fiscal year 24 and 25. And lastly, we remain confident about the opportunities that lie ahead of us. The company is focusing on geographical expansion, innovation, efficiency, enhancement, infrastructure, and human capital to deliver the best class solution to our customers. And now I would like to request our CFO, Mr. B.B. Singhal, to share his thoughts. Thank you, respected MD sir, and a very good evening to all the participants on the call. For the quarter, despite marginal decline in revenue, the EBITDA and PAT grew by 6% and 12% on year-on-year basis to rupees 139 crore and rupees 76 crore respectively. For first half of financial year 24, the revenue was rupees 3,791 crore as compared to 3,824 crore. EBITDA and PAT stood at rupees 255 crore and rupees 135 crore as compared to rupees 202 crore and rupees 90 crore respectively. The increase in operating performance can be attributed to the PLI scheme, backward integration, and the increased demand for value-added products. In lighting and consumer durables, for the quarter, the revenue stood at rupees 377 crore as against rupees 383 crore. EBITDA and PBT stood at rupees 35 crore and rupees 28 crore, registering a growth of 14% and 21% respectively. For the half year, the revenue stood at rupees 751 crore as against rupees 718 crore, a growth of 5% on year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 68 crore and rupees 58.4 crore, a growth of 30% and 46% respectively. In the steel pipes and strips, during second quarter of financial year 24, the company revenue stood at rupees 1,539 crore, while the EBITDA witnessed a growth of 3% year-on-year basis, with an EBITDA per metric ton of rupees 5,104 per metric ton. PBT for the quarter grew by 11% to rupees 76 crore. For H1 financial year 24, revenue stood at rupees 3,042 crore, while EBITDA and PBT grew by 25% and 55% year-on-year basis to rupees 187 crore and 131 crore respectively. As of 30th September 23, the company has reduced debt by rupees 190 crore and continues to remain long-term debt-free. Debt equity reduced to 0.11 multiple as on 30th September 23. As on 30th September 23, the net working capital days stood at 55 days, inventory days stood at 52 days, debtor days stood at 32 days, and creditor days stood at 19 days. As on 30th September 23, ROCE improved by 439 basis points and stood at 20.2% as compared to 15.8% in the last quarter. ROE stood at 15.57% as compared to 12.49% as on 30th June 23, a growth of 0.08 basis points. With this, I conclude the presentation and we can now open the floor for further question and answer. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Participants present on the audio bridge who wishes to ask question may press star and 1 on their touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Ladies and gentlemen, we will wait for the moment while the question queue assembles. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Participant present on the audio bridge who wishes to ask question may press star and 1 on their touch tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2.
The first question is from the line of Jatin Damania from Swan Investment Managers. Thank you, sir, for the opportunity. So just wanted to understand that for the steel pipes, you said that we have, for the volume terms, we have grown by almost 10 to 15%, but because of the lower realization, there was a hit. So want to understand, is there any one-off or inventory loss that we have taken during the quarter due to which EBITDA per ton has come down? Or so how shall one look at the operating performance going here for the next couple of quarters? Mr. Jatin, thank you very much. स्टील डिवीजन के अंदर में जो ज्यादा नहीं है, करीब 400-500 रुपए टन का जो है इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट है, बट जैसा मैंने बताया वॉल्यूम में 12% का ग्रोथ है और पूरे साल में हम ऐसा मानते हैं 12-13% का ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ हम मेंटेन करेंगे। लेकिन पार्टिकुलरली इस क्वार्टर के अंदर में जो है FY23 का जो 3,000 रुपये पर टन का जो है स्टील के दाम में कम है और मैं अगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन यानी Q1 वर्सेस Q2 देखूं तो करीब 1,000 रुपये टन के आसपास का प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो सर हमने कोई इन्वेंट्री लॉस लिया है ये क्वार्टर कि आर वी आर प्रॉपर्ली हैज इन टर्म्स ऑफ द रॉ मटेरियल? 400 से 500 रुपए टन का जो है EBITDA पर टन लॉस लिया है। तो मतलब जो अभी 5,100 रुपए का EBITDA पर टन है, हम लोग समझ सकते हैं कि 5,500 5,600 के आसपास रहेगा। और जैसा मैंने पहले भी कमेंट्री में कहा था, पूरे जनरली भी ऐसा होता है कि Q3 Q4 फेस्टिवल और जैसे एग्रीकल्चर वगैरह का साउथ इंडिया मार्केट इस सब में जो है वो तो जो हमने जो कमेंट्री इससे पहले भी दिया था उसी लाइन पे है। ये जरूर है कि इस बार थोड़ा दिवाली होने के कारण और थोड़ा ये रेवेन्यू बराबर होने के कारण जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि थोड़ा हम उससे थोड़ा डाउन है, बट उसको हम कवर कर लेंगे Q3 Q4 के अंदर। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि सेकेंड हाफ हमारे लिए स्ट्रांग रहेगा। पर सर हम अपनी स्टील पाइप में या हम लोग एक्सपेंशन भी कर रहे थे 1 मिलियन टन टू 1.2 जो 2 लाख टन की, उसका क्या स्टेटस है सर अभी और कब तक वो प्लांट कैपेसिटी आ जाएगी? ऐसा 3 हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो हमारी NCR में बहादुरगढ़ में फैक्ट्री है उसमें 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है कोल्ड रोलिंग में कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन उस पे स्टेज पे है। और जो हिंदूपुर में 75 करोड़ का LDP और GP के लिए इन्वेस्टमेंट था वो उसका लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया। उसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि सरकार से जमीन लेनी थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और जो बाकी इक्विपमेंट वगैरह प्रोसेस में है। और थर्ड इन्वेस्टमेंट LDP पाइप में हम लोग कर रहे हैं भुज यानी अंजार टेक्निकल टीम जो है उस पर काम कर रही है। अभी हमने उसकी टेक्नोलॉजी मशीन वगैरह फाइनल स्टेज पे है, ऐसा कह सकते हैं। तो सर करीब FY26 से ये अगले साल जो है मतलब जैसे बहादुरगढ़ वाला जो NCR वाला है वो करीब 9 महीना लगेगा और बाकी दोनों प्रोजेक्ट करीब साल भर लगेगा मतलब कंप्लीट होने। सर जैसे कि आपने बताया कि वी आर ऑलमोस्ट क्लोजर टू अ डेट फ्री और डेट टू इक्विटी 0.1 है, तो जैसे कि हमारा कैश फ्लो अगर मैं अगर देखूँ कि 400 करोड़ का हम लोग जनरेट कर रहे हैं एंड वी विल बी जनरेटिंग अनदर 400 करोड़ अगले साल, तो अपनी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी क्या है? आई मीन कैन यू गिव अस द आइडिया एंड हैज बोर्ड डिसाइडेड एनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी टू रिवॉर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स? जैसे आपने 2.5 रुपया तो ये क्वार्टर दिया, अनाउंस किया फॉर सेलिब्रेटिंग our 50 years, बट हाउ शैल वी लुक going ahead, how shall we look forward our capital allocation and the dividend distribution policy? नहीं, ऐसा है कि आपने अच्छा बताया। मैं कई बार ये बात बताया हूँ कि देखिए जो भी हम लोग कैश जनरेट करेंगे उसका करीब आधा हम लोग एनुअली जो है कैपेक्स के ऊपर में खर्च करेंगे और बाकी जो भी होगा वो शेयर होल्डर का धन होगा। अच्छा, थैंक यू। सर लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्टील पाइप, जैसे आपने लास्ट कॉल में बताया था कि प्रॉब्ली विल रीच टू अ 10% EBITDA मार्जिन एंड वी आर क्लोजर टू दैट, तो
So is there any further improvement one can expect on the steel, और क्या हम steady state run rate के हिसाब से 10% margin one can assume going forward? आप लाइटिंग का पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, लाइटिंग पे. हाँ, ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा 8% से हम जो है 9. मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम 10% से रहेंगे. तो Q3 Q4 में मतलब Q3 में 11% से ऊपर का रहेगा, Q4 में भी ऐसा ही रहेगा. तो 10 यानी डबल डिजिट सरपास करेंगे जो हमारा कमिटमेंट था. तो बिटवीन 10 to 11 कहीं हम लोग लैंड करेंगे, ऐसा मुझे लगता है. और लाइटिंग डिवीजन में ऐसा है, हम लोग काफी प्रोडक्ट मिक्स जो है हम लोग चेंज कर रहे हैं. हायर वैल्यू आइटम पे हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है. और टायर 2, टायर 3 के अलावा टायर 1 सिटी पे हम लोग पहुंच रहे हैं. और अभी देश भर में मतलब क्रॉस पैन इंडिया लेवल पे हमारे जो है इलेक्ट्रिशियन और रिटेलर्स के जो है मीट्स वगैरह हो रहे हैं. लाइटिंग में एक जरूर है कि आपको जैसे मैंने कमेंट्री में बताया कि 10 से 15% जो है प्राइस इरोजन हुआ है. यानी ओवरऑल कंपटीशन ने भी उतने दाम कम किए हैं. लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट इसलिए है क्योंकि हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया. दूसरा जो है परचेज के अंदर में काफी हम लोग एडवांस स्टेज तक जाकर के हमने नेगोशिएट किया. थर्ड जो बड़ा रोल उसमें ये है कि हमने काफी जो है इनोवेशन के ऊपर में ध्यान दिया. सब के कारण जो है मतलब इतना प्राइस फॉल होने के बावजूद भी मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है. Thank you sir, that's all from my side and wishing entire team of Surya Roshni a very happy Diwali. Thank you. और एक चीज और था, लाइटिंग डिवीजन में अगर रेवेन्यू हम फ्लैट का देख रहे हैं, बट अगर वो हमें प्राइस जो इरोजन है उसको जोड़ लो तो उसमें भी जो है 17-18% का वॉल्यूम में ग्रोथ है. Sure, noted. Thank you sir. Thank you. Participants who wishes to ask question may press star and 1 on their touchtone telephone. The next question is from the line of Shweta Dikshit from Systematics Group. Please go ahead. Hello. Hi. Good evening. Thank you for the opportunity. Sir, can you give some indication of the volume outlook in the second half steel segment, sir? And what was the capacity utilization this quarter, and what are you expecting in the coming quarter? जैसे आपने मतलब वॉल्यूम के बारे में पूछा, तो H2 FY24 के अंदर में करीब अगले 2 क्वार्टर में 5 लाख टन के आसपास का वॉल्यूम होगा. और जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 78 to 80% है. मतलब डिपेंडिंग थोड़ा किसी प्लांट में ज्यादा है कम है, बट एवरेज 78 to 80% है. Okay. तो पूरे साल में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 9 लाख से थोड़ा प्लस साइड में हम लोग रहेंगे. Okay. And any view on the volumes next year, because आपकी जो capacity expansion Hello? The line has dropped. The next question is from the line of... बता देना, हम 1 million प्लस करेंगे नेक्स्ट ईयर. Okay. The next question is from the line of Ruchita Kadge from iWealth. Please go ahead. Hello sir, very good evening. Yeah. So basically my question was that currently sir, how much is value added as a percentage of your total mix? And in the second half, like for the full year, as we're expecting that we should do around 6,500 EBITDA per ton. So, you know, how do we see the sales mix changing in the second half? You know, which would help us to get that kind of EBITDA per ton. So right now, yeah, these are the 2 questions. So right now value added अभी हमारा करीब 35% के आसपास है, 35% के आसपास. और
Q3 Q4 में ये सेगमेंट जो है करीब 40-42 के आसपास जो है इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। एंड जैसा आपने बताया EBITDA पर टन लास्ट ईयर करीब हमारा जो था उसके कंपैरिजन में हमने 6500 के बदले हमने कहा था इस साल हम लोग 6000 रुपये पर टन का करेंगे। तो मतलब उसके आसपास रहेंगे, मतलब 5500 से लेके 6000 रुपये पर टन EBITDA का आसपास थ्रू आउट द ईयर का हमारा पर टन EBITDA रहेगा। And so you expect this going ahead also for this to sustain, or you expect it to improve going ahead? नहीं, इसको सस्टेन भी करेंगे और इम्प्रूव भी करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ग्रेजुअली हमारा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली हम लोग स्टील में भी लाइटिंग में भी उस चीज को बढ़ा रहे हैं और थोड़े स्पेशल प्रोडक्ट और ओरिएंटेड होकर के काम कर रहे हैं। सो मुझे लगता है मतलब सस्टेन तो करेंगे बट इम्प्रूवमेंट भी उसमें दिखेगा। और आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो भी भले ही इंडस्ट्री में कई बार उतार चढ़ाव आया उसके बावजूद भी सूर्य रोशनी स्टेबल होकर के एक रीजनेबल ग्रोथ हम लोग करते रहे हैं। Okay. And sir, if you could just mention how has the trend been of this value added over the last 5 years? Has this improved or it has been stagnant? And what do we expect going ahead? नहीं, करीब ये अगर लास्ट 5-6 साल की बात करूं 10-12% से आज हम 35% तक पहुंचे हैं। हमने अपना पूरा फोकस जो है शिफ्ट किया है। तो आने वाले समय में उसी तरह से ग्रेजुअली मतलब हमारा इमीडिएट टारगेट ये है कि एटलीस्ट 50% प्रोडक्ट हम उस पर डील करेंगे जिसमें जो वैल्यू एडेड होगा, जिसमें मार्जिन थोड़े बेटर होंगे। Okay. And this you aim to achieve by which year? मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर हम लोग 50% के लेवल पे आ जाएंगे। और प्रिसाइजली मैं अभी देख रहा था मतलब FY18-19 हमने स्टार्ट किया था 9% से, जो अभी हम 35% बता रहे हैं। Okay, sir. Okay, sir. I'll get back in the queue. Thank you so much. Thank you. Participants who wishes to ask question may press star and 1 on their touchtone telephone. The next question is from the line of Kuber Chauhan from Anand Rathi. Please go ahead. Yeah, hi. Am I audible? Yes. Yes, sir. So I have a couple of questions over here. जैसे कि आपने बोला कि लाइटिंग डिवीजन में हम लोग ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं कंपेयर टू स्टील डिवीजन. So are we saying that our primary focus would be on lighting division from now because steel prices और स्टील में थोड़ा सा शेक आउट हुआ है? Are we saying that? नहीं, हमारा फोकस दोनों जगह बराबर है क्योंकि हमारी दोनों एक्सक्लूसिव अलग अलग टीम है. मैं एक कॉमन व्यक्ति हूँ, अदरवाइज सीईओ से लेकर के नीचे लेवल तक जो है दो अलग अलग टीम है. उनका अपना अपना अलग अलग विजन है और हमारी फोकस दोनों पे है और दोनों सेगमेंट भी अच्छे कर रहे हैं. Okay. And how we are seeing steel prices now? Like second half of FY2024 है, so उसमें आउटलुक क्या रहेगा and how we are witnessing it? कि अभी कैसा है स्टेबल है या फिर we are witnessing some more correction? बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है और बहुत ज्यादा जो है वोलेटाइल भी नहीं रहा पिछले अगर 3-4 महीने की बात करें. सो जैसे अभी 57,500 के आसपास जो है HR कोयल के रेट है इंडिया में, तो थोड़ा 1,000-1,500 रुपए का एक करेक्शन फ्यूचर में या अगले 1-2 महीने में हो सकता है. उतनी गुंजाइश अभी दिखती है, बट 3-4 महीने तक का जो मुझे दिखता है वो बता रहा हूँ. बाकी तो कोई प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. Okay, so we are saying that Q3 में भी ऐसे ही numbers रहेंगे in terms of in steel division we can say that? नहीं, Q3 में हमारे इससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट दिखेंगे बटन EBITDA में. Okay, and even in lighting division sir, अभी festive season just start, Diwali just start हुई है, आने वाली है. So how we are witnessing that also, and are we witnessing this uptick ahead also?
ऐसा है लाइटिंग डिवीजन के अंदर में, क्योंकि सीजन दिवाली सीजन भी शिफ्ट हुआ है इस क्वार्टर में यानी Q3 के अंदर में, तो जैसे 9.3 है 11% प्लस का जो है EBITDA मार्जिन Q3 में लाइटिंग डिवीजन में एक्सपेक्टेड है। 19%, राइट? नहीं, 11 प्लस % जो है EBITDA परसेंटेज लाइटिंग डिवीजन में एक्सपेक्टेड है। Okay, okay, sir. That's it from my side, and happy Diwali to you all. Thank you, जी, thank you. Yeah. Thank you. Participants who wishes to ask question may press star and 1 on their touchtone telephone. The next question is from the line of Shreyansh from Swan Investment Managers. Please go ahead. Hello, can you hear me, sir? जी, yes. सर, मुझे ये समझना था अपना केपेक्स गाइडेंस क्या होगा सर फॉर FY24 एंड FY25? तो FY24 जो करंट ईयर है उसके अंदर में हमने अभी तक 200 करोड़ का अप्रूवल लिया है बोर्ड से, और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी करीब 100 करोड़ की हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये दोनों साल मिला करके करीब जो है 300-325 करोड़ का आसपास का कैपेक्स होगा 24 एंड 25 में। ओके, और सर ये समझना था अपना जो 200 करोड़ का जो डेट है अभी, तो वो ये साल रीपे हो जाएगा कि FY25 में भी थोड़ा डेट होगा? 200 करोड़ रह गया है और हमारा स्टॉक लेवल भी हाईएस्ट लेवल पे इस समय। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रिसाइजली ये तो नहीं कहूँगा H2 में पूरा हो जाएगा, बट अगले साल FY25 के H1 में जरूर हम लोग डेट फ्री हो जाएंगे, क्योंकि प्रिसाइजली अभी 200 करोड़ के आसपास ही डेट हमारा रह गया बैलेंस। ओके, और सर ये एक अक्टूबर का एक जस्ट आउटलुक लेना था आपसे। स्टील सेगमेंट में अपना वॉल्यूम और EBITDA पर टन सर कैसा रैंप अप हो रहा है, और जिस यू कुड गिव अस सम अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट। नहीं, अभी वो तो रिजल्ट बाकी है, बट अच्छा गया है अक्टूबर, लाइटिंग हो या स्टील डिवीजन हो। ठीक है सर। और जैसा मैंने बताया ना, Q3 Q4 वैसे भी सूर्य रोशनी के केस में चाहे लाइटिंग सेगमेंट हो चाहे स्टील डिवीजन हो, ओरिजिनली भी हमेशा जो है आप हमारा पास के रिजल्ट्स भी देखेंगे तो Q3 Q4 मतलब यानी H1 के कंपैरिजन में H2 सब्सटेंशियली बेटर पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, और सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कैपिटल एलोकेशन में आर पॉलिसी इज 50% टुवर्ड्स केपेक्स एंड 50% टुवर्ड्स डिविडेंड। तो अपन जो 300 करोड़ का गाइडेंस दे रहे हैं टुवर्ड्स केपेक्स फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर कंबाइंड, वो तो कम हो गया ना सर फिर? नहीं, ये मैं कंबाइंड में दिया है, कभी 100 करोड़ कम भी होगा, कभी 100 करोड़ ज्यादा भी होगा, बट प्रिसाइजली 200 करोड़ खर्च करूंगा तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। बट मतलब जनरल उसमें अगर मैं कहूँ तो करीब आधा के आसपास हम लोग कैपेक्स रेगुलरली बेसिस पे करेंगे। सो ये तो एक एक्सपेक्टेड लाइन पे बता रहा हूँ। मान लीजिए कल को एक नई फैक्ट्री लगानी पड़ती है तो उसमें एक ही प्लांट के अंदर में करीब 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। सो डिपेंड करेगा, किसी साल कम किसी साल ज्यादा। और इस साल थोड़ा सा हमारा ये 3-4 महीने थोड़े प्रोजेक्ट जो हमने बोर्ड से अप्रूव कराए हुए थे उसमें थोड़ा डिले भी हुआ है कई कारणों से, इसलिए भी जो है अगले साल हम लोग 100-125 करोड़ के आसपास ही ऐसा मुझे लगता है कि FY25 में कर पाएंगे। ठीक है, और सर खाली ये लाइटिंग में समझना था अपना पाइप्स का कितना होगा सर इसमें कंट्रीब्यूशन? क्या चीज का कैपेक्स में? नहीं, अपना जो रेवेन्यू है लाइटिंग सेगमेंट में है उसमें PVC पाइप्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? करीब पूरे साल का 1600 करोड़ के आसपास का जो लाइटिंग का हमारा रेवेन्यू रहेगा उसमें 90 to 100 करोड़ के आसपास जो है PVC पाइप का रहेगा। ओके सर, थैंक यू। मैं वापस कतार में आ जाऊँ। थैंक यू। The next question is from the line of Saket Kapoor from Kapoor and Company. Please go ahead. नमस्कार मिस्टर जी, सर धन्यवाद सर मौके के लिए। सर जैसे आपने ये उल्लेख किया बात की हिस्टोरिकली हमारा H1 लोअर रहता है H2 से, और अगर हम लास्ट ईयर के H1 से करंट ईयर के H1 को कंपेयर करें तो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। और लास्ट ईयर सर अगर मेरी
याददाश्त अगर सही से लास्ट ईयर हमें इन्वेंट्री गेन H2 में सिग्निफिकेंट मिला था। मैंने EBITDA पर टन जो हमारा स्टील बिजनेस का है वो सिग्निफिकेंटली हायर था, जो इस साल उतना ऊंचा नहीं दिखता है, 9,000 प्लस हो गया था शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो अगर ये सारी चीजों को एक्सपेक्ट में लिया जाए तो लास्ट ईयर के नंबर के आसपास मैंने हम पहुंचते हुए दिखते हैं सर, क्योंकि लास्ट ईयर का हमको जो इन्वेंट्री का गेन था वो अभी स्टील में शायद एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता है। ऐसा आकलन करना सही है सर, कि अगर आप करेक्ट कर दीजिए मुझे। ऐसा है कि देखिए मतलब FY24 और FY25 जो है मतलब जो H2 है हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि हमारा पिछले साल मतलब एक फोर्थ क्वार्टर सब्सटेंशियली काफी अच्छे नंबर्स आए थे, इसलिए हमने शुरुआत में ही पहले ही Q1 के गाइडलाइंस में भी ये कहा था, गाइडेंस में भी, कि 6500 के कंपैरिजन में करीब 6,000 रुपये पर टन EBITDA के आसपास हम लोग करेंगे। तो उसी लाइन पे एक्सपेक्टेड है, 100-200 करोड़ रुपए कम हो सकता है, ये आने वाला समय बताएगा, 100-200 रुपये पर टन। ठीक है सर, धन्यवाद सर, और शुभ दीपावली सर पूरी टीम। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Shweta Dikshit from Systematics Group. Please go ahead. Hi, am I audible? उस समय I think line से कुछ connection issue हो गया था। I just एक बार आप ये बताएंगे क्या, जो आपका capacity expansion 200 KTPA का आएगा, उसमें can you throw some light on कि value added product portfolio का कैसे होगा उसमें split? नहीं, मतलब जो कैपेक्स का हमारा है आप पूछ रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिड पे इन्वेस्टमेंट कितना फोकस कैसा होगा, यही ना? हाँ, जैसे मतलब पूरी 200 KT की एक्सपेंशन है ना, 2000 टन तो उसमें करीब 150 करोड़ रुपए हमारा जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और 40-50 करोड़ रुपए हम जो है कोल्ड रोलिंग में कर रहे हैं। ओके, ठीक है। रेस्ट ऑफ माय क्वेश्चंस वर आंसर्ड, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Ruchita Khadge from iWealth. Please go ahead. Hello, sir. So just one more question on this value addition. So, sir, for every 1% value addition, how much does your EBITDA per ton improve? If you can give a ballpark number. ऐसा ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, और प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्ट नंबर्स बताना इतना सरल नहीं है, बट फिर भी मतलब ये बहुत कुछ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स पे ही डिपेंड करता है। Okay. And because right now when we are at 35%, we are expecting around 5,500 to 6,000 EBITDA per ton, and you're saying by FY25 this mix would become 50%, so जैसे कि APL Apollo tube है, just for comparison sir, वो लोग 60% or something is their value added, and they make around 6,000 EBITDA per ton. So can we go to that on a sustainable basis, just for my understanding? नहीं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ मैं तो, लेकिन अगर आप पीयर्स में भी कंपेयर करेंगे, मतलब एप्पल टू एप्पल अगर सेगमेंट वाइज आप अगर देखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में हमारा EBITDA पर टन जो है आपको बेटर मिलेगा। सो उससे ये रिफ्लेक्ट करता है कि मतलब वैल्यू एडेड जो है उसकी क्वांटिटी या उसका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है। Understood. और सर ये value added would be your API and your GI pipes, right? Basically. Yes, API, galvanize and export market too. Export market, और हम जो अभी आगे इसके डेफिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ओके।
ठीक है सर, अंडरस्टूड. थैंक यू सर. Thank you. Participants who wishes to ask question may press star and 1 on their touchtone telephone. The next question is from the line of Miraj Shah from Arihant. Please go ahead. थैंक यू सो मच सर अपॉर्चुनिटी के लिए. सर बस 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट वन कि आपने जैसे केपेक्स हाईलाइट किया, 3 डिफरेंट केपेक्स दैट वी आर प्लानिंग प्लान्स टाइमलाइन के साथ. सर उसका टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल कितना होगा, कीपिंग इन माइंड द करंट प्राइसेस ओनली. एंड सेकेंडली सर, करंटली स्टील साइड में बिजनेस में आर एक्सपोर्ट सेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? जस्ट दीज 2 क्वेश्चंस. थैंक यू. यस, ये करीब जो 200 करोड़ का जो हमारा कैपेक्स होगा, इसका जो है कंट्रीब्यूशन एडिशनल करीब 20% के आसपास होगा, यानी 1.25-2 लाख टन के आसपास होगा. और जो आपने सेगमेंट की बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पेशली आपने पूछा एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट का सेगमेंट का हमारा कंट्रीब्यूशन 18% है प्रिसाइजली. Currently 18% of steel only या फिर total sales में? Steel. Okay. And in sir value terms जो हम लोग capex कर रहे हैं उसका कितना additional कर सकता है total revenue value terms में? वही मतलब मैंने बताया ना, करीब जो है 1000 करोड़ के आसपास, यानी 20% के आसपास उसका इम्पैक्ट आएगा. Okay. Understood. Thank you sir. Thank you. The next question is from the line of Yogesh Mittal from Investor. Please go ahead, sir. Hi, sir. Sir, thanks for giving me this opportunity. I wanted to ask a question regarding the sectors you serve, mainly in the steel pipes. Like, it is, if you can just categorize the top 3 sectors or top 4 sectors, like structural steel or like the agricultural pipes, or like like that. So if you can give the top 3 or top 4 users the segments. मैं अगर आपको बात करूं तो हमारा बड़ा सेगमेंट तो है ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट, व्हिच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 55%. और ये बेसिकली एग्रीकल्चर है और स्ट्रक्चरल पाइप है इसमें. और जो है हमारा जो पीएसयू और जो एपीआई का कंट्रीब्यूशन करीब 16% है. और कोल्ड रोलिंग जो हम जो ऑटोमोबाइल के एंसिलरीज वगैरह को देते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी को देते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन करीब जो है 10% है. और एक्सपोर्ट का जो है मैंने बताया करीब 18-19% है. इस तरह से जो है मतलब अलग अलग कैटेगरी के अंदर में है. Right, sir. Sir, and two things more related to this. So the raw materials which are used for this are mainly the HR coils, or you have other raw materials also? Only. So we have 2 raw materials. One is HR coil and another is zinc. Okay. That's it. Sir, and just wanted to understand, like, it was being alluded by so many the callers in the call when we were talking about the raw material, which is the HR coils price reduction, or the overall the final product price reduction, which you were saying in the market, because of which the EBITDA has been reduced. So wanted to understand what is the pricing power in case the raw material prices reduce with the Surya and other competitors in the market. हमारा क्या है, so we don't manufacture HR coil, हम लोग तो सिर्फ पाइप बनाते. So अगर HR coil के दाम कम हो गए तो हमको पास ऑन करना पड़ता है, बढ़ जाता है तो हमको जो है वो बढ़ा हुआ प्राइस मिल जाता है. बढ़ते और घटते टाइम पे इंजीनियरिंग, सारी इंजीनियरिंग यही है कि घटते टाइम कम स्टॉक कैरी करो, बढ़ते टाइम ज्यादा रखो तो उसका एडवांटेज होता है. So basically हम wanted to understand, सर, मेरे को ये क्लैरिटी नहीं हुई, जो
EBITDA per टन रिड्यूस हुआ, वो क्यों हुआ? नहीं, वो EBITDA पर टन जो है हमारा H1 से देखेंगे स्लाइड्स मतलब बेटर ही है, और FY23 के कंपेयर करेंगे तो भी हमारा पर टन EBITDA बेटर ही है, और पूरे साल का भी अगर आप देखेंगे तो 6,000 रुपये पर टन आसपास का EBITDA रहेगा। और जो HR गोल का बता रहे हैं आप, मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल इस साल तो बिल्कुल नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है, इतना तो रहता ही है। राइट सर। सर, जो 55% जो आपका ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्टर है, मेनली जो आपके ऑफ टेकर्स हैं, उसमें व्हाट इज द आउटलुक इन द मार्केट राइट नाउ? द डीलर टॉक्स और द डिस्कशंस व्हिच यू आर हैविंग, हाउ इज द आउटलुक? नहीं, आउटलुक ओवरऑल अच्छा है, भारत का ही आउटलुक अच्छा है, और डिमांड ठीक है, थोड़ा बहुत प्राइस के हिसाब से एक आध महीना ऊपर नीचे रहता है। अदरवाइज जो है हमारी ये थ्रू आउट 50 साल के इतिहास में ये हमारी स्ट्रेंथ रही है और आगे भी रहेगा। और बहुत सारे स्टेट के अंदर में जो है हमको इस चीज के लिए हमको वो क्रेडिट भी मिलता है, हमको प्रीमियम भी मिलता है। और आज भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में जो है प्रकाश पाइप जो है एग्रीकल्चर यानी किसानों के लिए, कस्टमर्स के लिए जो है पहली पसंद है। राइट सर। सर, वन ऑफ द लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क, सर, आपका when we talk about the product, is there a competition in the product in terms of ये नए ये CPVC पाइप्स आ रहे हैं, इनसे भी कुछ कंपटीशन है किसी टारगेट मार्केट में आपके? नहीं, मार्केट में तो हर एक प्रोडक्ट पर कंपटीशन रहता ही है, और मैं ऐसा कहता हूँ कंपटीशन रहता है, चैलेंज रहता है, तभी आदमी आगे अच्छा परफॉर्म कर पाता है। सो कंपटीशन तो सभी में, लाइटिंग के अंदर में आप देखिए सबसे ज्यादा कंपटीशन आज लाइटिंग में है, क्योंकि आज तक जो है ये लाइटिंग इंडस्ट्री LED आने के बाद मैच्योर ही नहीं हुई। आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोडक्ट जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये 1 साल तक चलेगा या उससे पहले ही मुझे नया प्रोडक्ट लेकर के देना पड़ेगा। उसका मेन रीजन ये है कि लाइटिंग इंडस्ट्री में आज भी 50% से ज्यादा मार्केट शेयर जो है उन लोगों के हाथ में है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको आप कह सकते हैं, इंपोर्टेड मटेरियल मंगा लिया CKD में, SKD में, और उसको स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी यूज कर लिया और उसको मार्केट में जो है काफी मतलब उसको बना करके खुद ही बेच दिया। तो ये एक फेज है लाइटिंग इंडस्ट्री, और बहुत इनफैक्ट पिछले 3-4 साल से ही काफी टफ रही है। और इसी तरह स्टील डिवीजन के अंदर में भी कंपटीशन रहता है, बट स्टील डिवीजन में जो मेरा अनुभव रहा इतने साल का, जनरली आपके जो है डीलर नेटवर्क के थ्रू माल बेचना हमारी प्रेफरेंस रहती है। वहाँ के अंदर में जो हमारे 50 साल के जो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड, हमारे रिलेशनशिप के बेसिस में, क्वालिटी के ऊपर में, उसमें काफी कुछ डिपेंड करता है। और बड़ा मेजर हमारा एक चंक एक्सपोर्ट का है, वो भी हमारे स्टॉकिस्ट जैसे ही एडवांस में हमको पैसा मिलता है, फिर हम यहाँ से LC मिलता है, फिर मटेरियल डिस्पैच करते हैं। और एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें प्रोजेक्ट और API है, वो मतलब उसमें मतलब कंपटीशन रहता है, बट उसके बावजूद भी उसके अंदर में जो है मार्जिन काफी बेटर रहते हैं। यस सर। सर, आई वाज स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट द CPVC पाइप्स व्हिच आर लाइक, सो किसी सेगमेंट में उस पर्टिकुलर आई मीन टू से प्रोडक्ट itself, not about the competitors, in terms of the product being competing with this, कुछ इसके बारे में हमारा छोटा बिजनेस है, और हम लोग उसमें हर क्वार्टर में मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसलिए मैं कभी इस पर जिक्र नहीं करता। सो अभी भी हमारी जो है ऑलमोस्ट हम कैपेसिटी पिछले 1 साल में डबल कर चुके हैं। सर, व्हाट आई वाज आस्किंग इज, जैसे आपके पाइप्स कोई एग्रीकल्चरल या किसी और सेगमेंट्स में यूज होते हैं, नहीं, एग्रीकल्चरल पाइप्स या प्लम्बिंग पाइप्स या व्हाटएवर, उसमें कोई CPVC को से कंपटीशन है या ये स्पेसिफिक यूज के लिए यूज होते हैं? हमारा ऐसा था कि जो प्लम्बिंग सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट जो है PVC पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि स्टील पाइप लेकर के प्लम्बर एक दिन में 1 बाथरूम तैयार करता है स्टील पाइप से, लेकिन PVC में वो 3 से 4 बाथरूम रेडी कर देता है।
तो आपके एग्जिस्टिंग जो स्टील पाइप्स हैं सर जो आपके एग्जिस्टिंग वाला जो प्रोडक्ट जो सेगमेंट है उसमें कोई कंपटीशन नहीं है? उसमें पीवीसी प्लास्टिक के कारण कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो हमारे सेगमेंट है उसके अंदर में वो पीवीसी कैटर नहीं कर सकता। एटलीस्ट आज तक तो ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, वो उस टाइप के यूजेस हैं। राइट सर। ओके सर, so that's all from my side. Thanks for your time and all the best to your company. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Vignesh Iyer from Sequent Investments. Please go ahead. Congratulations, sir, on good set of numbers, and thank you for the opportunity. सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा है कि करीब 9 लाख टन करेंगे हम पाइप सेगमेंट में रफली FY24 में, और लाइटिंग में लगभग डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपका कोई FY25 के लिए नंबर है माइंड में कि कितना लाख टन आप करना चाहोगे FY25 में, और लाइटिंग में क्या ग्रोथ आ सकता है? ऐसा है कि हमारा जैसे स्टील का मैंने बताया, नेक्स्ट ईयर की FY25 की बात करूं तो 1 मिलियन प्लस हमारी वॉल्यूम रहेगी स्टील सेगमेंट में। और लाइटिंग डिवीजन के अंदर में मुझे, हालांकि मैं पहले भी मुझे लगता था इससे ज्यादा प्राइस इरोजन नहीं होना चाहिए, अब बहुत ज्यादा स्कोप मुझे लगता है बचा नहीं है। और लाइटिंग डिवीजन हम पिछले अगर 5 साल का भी हम देखें, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ 15 से 20% के आसपास रेगुलर हम लोग ग्रोथ करते रहे हैं, जितने भी हर्डल्स रहे उसके बावजूद भी। तो मैं ऐसा मानता हूं जो है 15% के आसपास ग्रोथ FY25 में भी हम लोग, प्राइस इरोजन थोड़ा बहुत जो रहेगा उसके बावजूद भी हम लोग करेंगे। ओके सर, डिवीजन में और है कि मार्जिन में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। एट वन टाइम वी आर एट 14% व्हेन CFL वाज पीक। अब उसी दिशा में ग्रेजुअली हम लोग इस नए प्रोडक्ट के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, विद नए प्रोडक्ट मिक्स के साथ जो है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बरोबर सर, बरोबर सर। तो मैं आपका ये देख रहा था कि तो इस साल के बाद तो सर मतलब आपका तो केपेक्स जो आपने 2 साल का प्लान दे दिया है, तो आपके पास काफी कैश फ्लो बच जाएंगे, मतलब आप इवन केपेक्स आप कंसीडर कर लोगे तो सर आपने कुछ सोचा है क्या कि मतलब बायबैक करे या ऐसा कुछ? क्योंकि क्या होता है कि डिविडेंड साइड में इन्वेस्टर को मतलब बड़ा टैक्स लग जाता है 30% तक। तो ऐसा है कि मैं एक मोटा कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं देसी भाषा में वो दिया हूँ, बट आप ये मान के चलिए कि जो भी कैपेक्स होगा उसके अलावा जो होगा वो जो है शेयर होल्डर का होगा, लेकिन वो डिविडेंड रूट नहीं रहेगा, इतना तो मैं बता सकता हूँ। वो रहेगा, वो हमारा एक फर्म कमिटमेंट है, रेगुलरली हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड हम बढ़ा करके देते ही हैं। बट फिर भी अभी ऐसा कोई फर्म डिसीजन डायरेक्टर ने नहीं लिया, बोर्ड ने नहीं लिया, तो मैं उस पर अभी कोई कमेंट करना मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। सो होपफुली बाय नेक्स्ट जो है Q3 में या Q4 तक शायद उसमें कुछ क्लैरिटी रहेगी। बट यू आर राइट कि हम लोग 1500 के तक से वॉल्यूम में ग्रोथ करते हुए जो इस लेवल तक आए हैं, सो मुझे लगता है फ्यूचर अच्छा है। हमको और कैपेक्स करना है और ज्योग्राफिकल लोकेशन में जाना है और प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करते हुए मुझे लगता है कि हमारी मतलब वैल्यूएशन के अंदर में काफी स्कोप पोटेंशियल मुझे दिखता है। सही कह रहे हो सर। वो भी हम देख ही रहे 2-3 क्वार्टर से जो परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव होते जा रहा है। और इसमें एज एन इन्वेस्टर तो मेरा सिर्फ एक मतलब मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप अगर ये सोचे कि आपका लाइटिंग डिवीजन आप अलग करें तो कंपनी को काफी अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। मतलब लाइटिंग बिजनेस को जो मार्केट में वैल्यूएशन मिल रहा है आज पूरे कंपनी को भी उतना मिल नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है कि वो साइड से भी वैल्यू क्रिएशन बन सकता है इन्वेस्टर के लिए। तो ये सिर्फ मेरा सोच है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी ऐसा कई लोगों ने सजेस्ट किया है, और जैसे आप इन्वेस्टर, हमारे प्रोमोटर भी इन्वेस्टर ही है, तो हमने उनको, हमारे बोर्ड को एक बार बताया भी हमने,
तो ऐसी कुछ बात होगी तो बट ये हमारे ध्यान में है जो आपने सुझाव दिया है, बट वो तो जब डिसीजन होगा बट उसके बावजूद भी हम लोग जो है शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएशन हो उस पर हम रेगुलर काम करते हैं, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर ही है जिन्होंने हमको इस बोर्ड में एमडी बना के डायरेक्टर बना के रखा है, और हमारी जवाबदेही आपके प्रति बनती है, वो ईमानदारी से हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया, और ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, we take that as the last question. And now I hand the conference over to Mr. Bharat Bhushan Singhal, CFO and Company Secretary, for closing comments. Thank you everyone for joining us today on this earning call. We appreciate your interest in Surya Roshni Limited. I sincerely once again thank to our MD and the CEO for sparing their valuable time and addressing queries raised by the participants who attended the call. I would also like to take this opportunity to wish everyone on this call a very happy Diwali from the entire Surya Roshni family. For any further queries, if any, contact SGA, our investor relation advisor. Thank you once again. On behalf of Surya Roshni Limited, that